Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. The paradise on earth resonating with melodious tunes. The spell-binding beauty of the valley is a perfect setting to stir the imagination of artists for creating some soul-soothing songs and music. Kashmir, known as the paradise on earth, is famous world over for its natural, pristine beauty. But it's also the home to some incredible talent. Over the next half an hour, we'll introduce you to youngsters who are out on a musical journey to prove to the world that given a chance, they're next to none. Mizrab has thrown open its doors for music lovers in Kashmir. Kashmir's first music school, established over a decade ago, is operational now. Over 70 students have enrolled in Mizrab. It's free for those who cannot afford to pay the fees. Youngsters playing guitar and rabab, mentored by the formidable team of Irfan Bilal, famous in Kashmir for their contribution in the world of music. They have participated in several music shows in the country and abroad. But it wasn't easy for the duo trained outside Kashmir to break local stereotypes. पहले यहाँ कश्मीर में हमने 2-3 साल हम लोगों को जिसको बोलते हैं ना, हमें एक्सेप्ट ही नहीं किया यहाँ किसी ने। हमारा जॉनरा जो था वो बाहर का था। हम लोग पॉप म्यूज़िक गाते थे, हम लोग वेस्टर्न इंग्लिश म्यूज़िक गाते थे, हम लोग बाकी चीज़ें करते थे। तो एक कश्मीरी होने के नाते यहाँ पे सूफ़ी म्यूज़िक ज़्यादा चलता है, तो हम लोगों को पहले एक्सेप्ट नहीं किया। लोगों ने बोला कि आप लोगों ने यहाँ कश्मीर हमारे जॉनर को ख़राब कर दिया, हमारे सूफ़ी म्यूज़िक को ख़राब किया। लेकिन फिर हम कभी किसी कॉलेज में हमने हल्का फुल्का कॉन्सर्ट टाइप कुछ ऐसा, तो उस दौरान कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह यूथ से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। They are using music as a therapy to counter the sense of hopelessness that's gripped Kashmir due to years of conflict and violence. Musical campaigns are also run by them against rampant drug addiction in Kashmir. छोटे छोटे बच्चे जिनको नशे की लत लग गई है, वो आजकल म्यूज़िक परफॉर्म करते हैं हमारे साथ। उन्होंने वहाँ पे स्टेज पे गाया बजाया भी, काफ़ी सुधार आ गया इस चीज़ से। ये भी एक अच्छा काम ही है और दूसरा सुधार है हमारी वैली के लिए। और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिससे हम एक थेरेपी देते हैं एक डिप्रेसिव लोगों को। After the eruption of militancy in early 90s, the avenues for entertainment closed down in Kashmir. Music industry took a back seat. Hardly any music albums were released. With dreams in their eyes, these budding Kashmiri artists are practicing hard every day, not just to gain prominence in Kashmir, but also to compete on national level. 22-year-old Yavar Shaukat trains for hours to perfect playing musical instruments. He wanted to be a professional guitar player since he was a child, but is not confident that music will become the ultimate goal and destination of his life. Although he says he will give it his best shot.
کشمیر کا انوائرمنٹ آپ مان لیجیے یہاں اسکوپ اتنا نہیں ہے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے نا باہر کشمیر سے جا کے آپ اپنا اگر تو اس میں جانا ہی ہے تو پھر باہر جا کے جہاں بھی جائے ابھی تو فی الحال مطلب میں نے رکھا ہے کہ میں ایز اے شوق ایز اے پیشن میں سیکھوں گا, میں اپنے آپ کو پروو کروں گا, پھر اوپر والے تک ہے, اگر اوپر والے نے رکھا ہوگا پروفیشن تو پھر ایز اے پروفیشن لینے کے لیے بھی تیار ہوں میں. کتنا آپ ٹائم دیتے ہو اس کو سیکھنے میں کہ یہاں آئے آدھا گھنٹہ سیکھا بس یا اب میرا تقریباً پورا دن اسی کے ساتھ چلا جاتا ہے, فل ڈے, اور میری پریکٹس ہوتی ہے تقریباً 4-4.5 گھنٹے کی. ہارڈ کور پریکٹس کرتا ہوں میں سر. تو صبح میں آتا ہوں 9 بجے اسٹوڈیو آتا ہوں اور شام کو 10 بجے میں یہاں سے نکلتا ہوں. 10 کے بعد میں گھر جاتا ہوں, کھانا کھاتا ہوں, اور اس کے بعد میں پھر سے 1-2 گھنٹہ پریکٹس کر کے سوتا ہوں اور صبح پھر سے یہاں آ جاتا ہوں. لگ بھگ آپ پورا ٹائم اسی کے ساتھ. پھر تو یہی آپ کا پروفیشن ہو گیا نا. ابھی ہمارے کالج والج سب بند ہے تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی, اور اس چیز میں تو انٹرسٹ. آپ کو اپنی جگہ کیا لگتا ہے کہاں تک پہنچ گئے آپ اس میں, ایک خود بھی اندازہ ہوتا ہے نا آپ کہاں کس لیول تک پہنچ گئے ہو؟ ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ جہاں پہ میں مطلب جہاں تک میرا ٹارگیٹ تھا اپنے ٹارگیٹس میں ساتھ ساتھ کمپلیٹ کر رہا ہوں, کہ میرا ٹارگیٹ ہوتا ہے آج میرے کو یہ آنا چاہیے, اب مجھے اس پہ ہولڈ لانا ہے, تو اس حساب سے اس پہ 7 دن 8 دن اس حساب سے میں چلتا رہتا ہوں آگے. اور انشاءاللہ ابھی میرا ٹارگیٹ ہے 8-9 مہینے میں I'll be ready to play anything. 20-year-old Muhammad Shadab lost his memory after he met with a motorcycle accident 2 years ago. He forgot all about playing instruments that he had learned for 2 years. Although he stopped his education, but he was committed to restart his musical journey afresh. He says music is still a taboo in Kashmir, but that will not deter him to pursue his passion. میں عرفان سر کے گھر میں ہی ہوتا تھا. ایکسیڈنٹ کے بعد جب میرا کار ہوا میں واکر پہ چلتا تھا کیونکہ میری میجر سرجری ہوئی لیگ میں پھر واکر پہ چلتا تھا. پھر مجھے اپنے گھر میں رکھتا تھا عرفان سر, اور دھیرے دھیرے پھر یاد دلاتا تھا آپ نے کیا سیکھا تھا پچھلے 2016 سے. جو بھی میں نے 2016 سے سیکھا تھا 2019 اکتوبر میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا, میں سب کچھ بھول گیا. پھر سر نے مجھے ہاتھ پکڑ کے نئے سے سکھایا. 18-year-old Jahangir began to learn singing when he was just in his 4th standard. A trip to Delhi for an audition in the Saregama music contest became his main motivation to become a vocalist. The family backed him initially, but he is uncertain about the future. جب میں نے جو سٹارٹ کیا تھا اسکول سے ہی, لیکن جب پھر میں سارے لل چیمپس کے لیے 18 میں چلا گیا دلی. اس وقت گھر والوں نے مجھے بولا نا تم جاؤ تمہاری آواز اچھی ہے, لیکن جب پھر میں خود اپنی مرضی سے اس میوزک میں گھسا تو اب گھر والے تھوڑا یہ کر رہے ہیں. کبھی دن خوش بھی ہو جاتے, کسی دن اگر لیٹ ہو گیا آج میں صبح 10 بجے آیا ہوں یہاں پہ, ابھی گھر جانا ہے, اگر تھوڑا سا بھی گھر والوں پہ ایسا ہوا تو پھر سننا پڑتا ہے بہت. یہ کہاں جا رہے ہو, کتابوں کی طرف دھیان ہی نہیں, اوپر سے 12 سال میڈیکل سبجیکٹ ہے, وہ ہے یہ, وہ تو سننا ہی پڑتا ہے ہر روز. پریکٹس کے لیے کرتے ہیں, اگر تار سپتک کے لیے جاتے ہیں سر, مدھیہ سپتک کے بعد تار سپتک آتا ہے ہائر اوکٹیو. اگر اس میں معمولی سی آواز دیتے ہیں تو نیبرہڈ بولتا ہے یار اس کو کیا ہو گیا ہے, پھر تو وہ پاپا کو جاتا ہے, بولتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے. وہ تو مشکل یہاں پہ بہت مشکل ہے. It's youngsters like these who are putting Kashmir back on the entertainment map. The trend has really picked up. There are 60 music bands in Kashmir currently. For these budding artists, internet is the medium to break the barriers for reaching out to larger audiences.
Social media has helped them to gain popularity. Some of them have their own YouTube channels. बहबल जाने दीदार से रहबरो में दिलस कास गांगल बहबल जाने दीदार से दिलबरो. Meet Mehmeed Saeed, the young Kashmiri singer who has proved her mettle in the field of singing. She had her family's back after she decided to make singing her profession a decade back. Since then, she has been performing in India and in many countries around the world, like the US, Australia, and the UAE. But for artists like her, it's not been a cakewalk. She has surmounted many obstacles on the way to emerge as an ace Kashmiri singer. Back-to-back lockdowns in Kashmir following the abrogation of Article 370 and COVID acted as a big stumbling block. A communication blockade for months on row made things worse. We have social media in present time. That has made things a little easier, because when I started, there wasn't this much of scope. There wasn't like, you didn't have this much of audience. You know, you can record a song here, and you know, you could be an overnight celebrity, because you know, people around the globe, Kashmiris, would listen to you and maybe fall in love with you, your voice, your talent, or whatever. It has helped a lot. Like anytime I feel like sharing my new composition, sharing my new song, I just post it, and you know, people come to know about the song, they listen to it, they fall in love with it. So it has been a great medium, and I actually want there should be, you know, more of it. But undeterred by difficulties, an optimistic Mehmeed says nothing can prevent her from achieving her goal of scaling new heights in the field of singing. She didn't shift her base from Kashmir, although she received options for moving to Mumbai for singing. She is now planning to hold an online concert after her travel plans went out of gear due to COVID lockdown. At this point of time, we are at least able to post something, we are able to sing and, you know, show it off to the people. But at that time, we didn't have anything. We were like helpless. We were kind of in jails. We weren't able to go out. We were not able to express ourselves. It was like breathlessness feeling. You know, you were feeling breathlessness. You weren't able to breathe properly. You didn't have the freedom to breathe or talk or do whatever you wanted to do. Like, I think for anybody, COVID has, you know, brought that halt in life. I mean, we could have done another tour around the world, like our concerts. But then because of COVID, we have not been able to travel. We are stuck. And yes, but, you know, as I said, we are trying to find out ways how we can reach out to people and, you know, make that consistency exist, you know, not stop. So, like I
try to record at home, send it somewhere for mixing, balancing, and just release it online. In fact, in the times of COVID, we are also planning that we would do some online concerts. So that we haven't done yet, but we are planning, yes. So now it's so easy that you can actually do an online concert. That's right. That's right. You're planning for that. We are kind of planning for that, yes. While some youngsters are keen on learning music and singing and want to make a name in the field of entertainment, there are others who have turned YouTubers. Internet blockade was a big setback for them, but now they're back in business, making funny videos using local themes. मास्क वालो लोगों था मास्क तापस तो वायरस वापस है फिर मास्क APL BPL DPL मास्क है सस्ता मास्क यहाँ पर है बोया वन सा है क्या रेट है मास्क का वही मैंने मास्क जो मुख्तलिफ रेट है Kashmiri Kalakar or Kashmiri Artist is a group of YouTubers from North Kashmir, Sopore, who make funny videos to cheer up the people in the valley caught in conflict. The aim is not just to entertain the people through satirical videos, but also to convey social messages on issues like rash driving and drug addiction. Meet Mudassir, Junaid, Shaukat and Atif, all the four in their 20s, who have been making funny videos since 2018. Over the last 3 years, they have generated a lot of traction on the social media with nearly 3 lakh subscribers for their YouTube channel. They are producing content which is both a source of entertainment and information. However, they say in Kashmir, artists can't solely depend on social media videos for earning a livelihood due to constant threat of an internet blackout. According to them, there are sections in Kashmir that don't approve of what they are doing, but they are hopeful that the trend might change soon. For them, hard work is the key to overcome all challenge for realizing their dreams. मैं कौशल कलाकार का एडमिन भी और फाउंडर भी हूँ। कौशल कलाकार लेट दिसंबर 2018 में स्टार्ट हुआ था। एक कंसेप्ट मेरे दिमाग में ऐसा है कि यहाँ पे लोग डिप्रेशन में थे, हम देखते थे कि यहाँ पे हर टाइम गम ही रहता है, तो हमने सोचा कि कुछ ना ऐसा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्रिएट करे कि जो लोगों को हंसाए भी और साथ साथ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी दे। जाहिर सी बात है, जब रिस्ट्रिक्शंस थी, मतलब 6 महीने बिल्कुल बंद ही था, बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे उस तरह से, जाहिर सी बात है फिर तो डिप्रेशन में ही बंदा जाता है। और हमारी एक आदत बनी थी, हम हर संडे को हम शूटिंग करते थे, हमारी एक वो हैबिट एक बन गई थी, तो फिर बिल्कुल 6 महीने हमने बिल्कुल कोई काम ही नहीं किया है। अगर हम YouTube की बात करें या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, अगर हम इसको फुल टाइम बनाना चाहते हैं कश्मीर में, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि यहाँ के इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ की वो ऑडियंस नहीं है जो आपको कंटिन्यू देखे। आज देख रहे हैं, क्या पता कल नहीं देखेंगे, कल उनका कुछ और टेस्ट होगा। सर एक टोटल किस मास्क की लगी तमाम महल्लस में छेद खराब मैं आना इतिहास बन कोई वलस ही वस्तु टीम में ठीक है से बस समझदार कोई छिगाज मास्क 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 सर यो श्राव तो ब्लड की थोड़ी वैक्सीन होती है जल्दी में नो टेस्ट कर रहा है सर वैक्सीन कोरना में रात ही मुंह क्या सुना तुम्हारा दिन सर क्या टेस्ट तलश बसा नेगेटिव सर आताश बारडी से क्या गई ना कर मिशन लिया कर जल्दी आली मशीन सहित असा क्या टेंशन रटियो सर मशीन मैंने खुदाया ड्रिल आगो तई भरा चाल बट अभी हम सोपोर में यहाँ पे शूटिंग करना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम कहीं शूटिंग करने जाते हैं तो लोग दूसरी अलग ही नज़र से देखते हैं, इनको लगता है कि चाहे कुछ चीप ही चल रहा है, तो वो माइंड सेट है यहाँ पे लोगों का। मैं पूरे लोगों का नहीं कहता, बट बहुत ही कम परसेंटेज लोगों की है, बट उनकी वो माइंड सेट है कि ये चीज़ सही नहीं हो रही है जो ये कर रहे हैं। पर इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि आगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे ये ठीक हो जाएगी, लोग हमें एक्सेप्ट करने लगेंगे या इस कंटेंट या इस आर्ट को पहचानने लगेंगे। लोग समझते हैं कि YouTube पे आना एक आसान बात है, मगर मैं उन लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि आप भी आओ, YouTube आपके लिए भी है।
आप भी यूट्यूब पे आओ, फिर देखो ये कितना मुश्किल काम है और इसके पीछे और कोई रियलिटी होती है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और लोग समझते हैं कि इनके पास कोई काम नहीं इसीलिए यूट्यूब पे आए हैं, मगर अल्लाह की मदद से मैं बिज़नेस भी कर रहा हूँ और मैं स्टूडेंट भी हूँ और साथ ही यूट्यूब पे भी हूँ मैं। अगर मुझे किसी वीडियो में लेडीज़ रोल होता था तो दूसरे दिन जब मैं घर से बाहर निकलता था तो लोग मुझे उसी नाम से पुकारते थे, मगर मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी उससे कि लोग हमारी वजह से हंस रहे, खुश रह रहे, जो कि हमारा मेन मोटिव है। हाँ, जब हमने पहले यूट्यूब स्टार्ट किया तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमसे नफ़रत करने लगे, कुछ ऐसे भी थे जो हमसे प्यार करने लगे। मतलब लोगों की सोच, किसी की अच्छी सोच है, किसी की गलत है। ऑलमोस्ट पहले बहुत दिक्कत हुई, लोग बोलते थे ये कुछ अजीब ही करते हैं, इनको ये नहीं करना चाहिए। फिर जब हमने आगे बढ़े, फिर अच्छे वीडियो बनाए तो लोग आज हमें बहुत सपोर्ट ही कर रहे हैं। जहाँ कभी भी देखते हैं तो गले मिलते हैं, सेल्फी उठाते हैं, अपना नंबर मांगते हैं। हमारा यूएसपी इंफोटेनमेंट है, नॉट एंटरटेनमेंट। इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। अगर हमारा कोई भी वीडियो आप देखोगे उसके आखिर में या उसके बीच में आपको कोई ना कोई मैसेज मिल ही जाती है, चाहे वो ड्रग्स पे हो, सोशल इश्यूज़ पे हो या किसी भी इश्यूज़ पे हो। हम जब भी वीडियो लिखते हैं तो हम पहले ये डिसाइड करते हैं आज किस सोशल इशू पे हम वीडियो बनाएं, ना कि कौन सी कॉमेडी करें। उसके बाद हम कॉमेडी डिसाइड करते हैं। तो यही मेरे ख्याल से हमें लगता है कि जो हमें अलग कर देती है बाकी लोगों से, बाकी यूट्यूबर्स से। तो आज बड़ी बासा हो तो बड़ी बासा छुस और शराय और छुस शोकदा क्या करा वो से एमसी विजिटिंग कार्ड्स पे पनो नंबर लिखा एमिशना फोन स्विच ऑफ आसा पता वो चून ते जना को स्विच ऑफ था मेवन ते लेखे मैं वंदा जाकदा विजिटिंग कार्ड मेवन नंबर लिखो तो जुवा पक जल्दी स्विच ऑफ ओए जिनेदा ओए मैं चला फोड़ा कोई जिनेदा नफरा मोरते नहीं कतला जोरस ताजो पागल गोस बोल वाला दो बस से पाक मेरा बोले नहीं ते वक्त 3 years ago, Parvez Ahmed Butt and 4 of his friends established a YouTube channel to counter the sense of gloom in Kashmir. Kashmiri Kal Kharab, YouTube entertainment channel with satirical content and funny videos, has close to 8 lakh subscribers. Day-to-day issues of Kashmir are picked up by them and packaged with humor to bring a smile on the faces of people. This band of young men also focuses on cheering up those battling terminal diseases. मैं अभी कश्मीरी कल खराब यूट्यूब चैनल का एडमिन हूँ। तो ऑलमोस्ट लगभग 2-3 साल पहले 2018 आई गेस तो मेरे दिमाग में आया कि मैं यूट्यूब पे काम करूं, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस देखा करता था यूट्यूब पे। तो फिर मैंने इस पे रिसर्च कर लिया ये यूट्यूब क्या है। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं। फिर उस वक्त मोटिव पैसे कमाने का कुछ भी नहीं था, मैंने सोचा सिंपली एज ए एंटरटेन करें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा था कि कश्मीर में जो भी लोग इस वक्त है वो सारे गम और डिप्रेशन में है। तो मैंने सोचा कम से कम क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे इन लोगों को कम से कम ये दुख दूर हो जाए। और फाइनली जब हमने स्टार्ट किया तो लोगों को उस वक्त मज़ा आ गया और उन्हें बोला कि हाँ इनमें कुछ है जो हम इस गम से निकाल सकेंगे। तो उनको उस गम में कम से कम कुछ थोड़ी राहत मिली, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया और विद इन फ्यू वीडियोज़ हमने अपना सिल्वर मेडल उस वक्त हासिल किया। डिजल ब्रो अच्छा थो सरकारन अंदरी लालवन नार हाय पेट्रोल किलवा गस में आसन गाड़न दिमहानार तुम्हें तो चुकु ये दी चीर को अब का चाहे हमसाय नहीं जा सकते तुम्हें सोलस चने गसुन नार पे सालस तकी बंडपुर गसुन तो कास मस गसक त ऐसे त्रे गोर छ मन नार चुन ताय पेट्रोल को 8 रुपए डीजल के नाम नामत बरबार दोन चु जंग चला अब क्या करे पेट्रोल को द्रुक तेल के पुतिर गसा आज गो अरेंज गैरेज करून के या गो रीड आज वन को सोनिस गुर रेड अच्छा गाड़ी को खराब बकचा रीड ते पैसे बकिन खानदानी छस हाय चाचक नार चपा ते छिना गाम पातै बस करा चेस ताको जाय कादरी छै मेरा घर मैं बस बेन से करा फोन पाख चीर को भाई वास
سا چل اگر یو نصیب بہ غلط ریٹ مے سۭتۍ کر گۄڈٕ فٲصلہٕ گاڑِ منٛز نہٕ کینٛہہ کسا ریٹ گۄڈٕ چھِ تھوٚمُت بُتھ ژوٗرِ تمہیں اگر بیت ہمسایہ وٕچھس بہٕ ژھٕنہٕ أتی دٔریاوس اے ژٕ چھکھ قٕسمت واجِنۍ ہے چلو وۄنۍ کر کرکھ سفراز تھا بُتھ ژوٗرِ مجھے بتائیے آرٹیکل ٹوٹا تو کافی زیادہ ریسٹرکشنز آئی تھی, کم سے کم 1-1.5 سال نیٹ بند تھا, تو کافی ڈپریشن میں ہو گئے تھے ہم, کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. ہمیں یہ تک نہیں پتا تھا کہ ہمیں چینل ہے بھی یا نہیں. آپ بول رہے ہو لاس تو کافی زیادہ ہو گیا تھا. کم سے کم اس وقت ہمارے چینل گروئنگ سٹیج پہ تھی, کافی زیادہ گروتھ تھی. مجھے آج بھی لگتا ہے کہ کم سے کم ہم نے 1-1.5 لاکھ سبسکرائبر اس دن لاس کیے, اور ویوز کی تو بات ہی نہیں کرتے. ویوز کافی زیادہ لاس ہوئے, کیونکہ 1.5 سال کافی زیادہ بڑا ٹائم ہوتا ہے. لگ بھگ ہماری چینل اس وقت اتنی گروتھ چل رہی تھی نا, مطلب ہم لگ بھگ آج 1 ملین کے آس پاس ہوتے لگ بھگ میرے خیال سے. کشمیر کی کشتی ہے اس وقت یہ ڈوبی ہے, اس کو پار لگانا بہت ہی مشکل ہے. تو اسی ذریعے سے ہم یہ ویڈیوز بناتے ہیں, لوگوں کا دل خوش کرتے ہیں, لوگ خوش ہو جاتے ہیں, تو ہمیں بھی خوشی محسوس ہوتی ہے. بس کچھ دنوں کی ریسنٹلی یہ بات ہو گئی کہ میں ایل ڈی کے پاس تھا, ایک لڑکا آیا دوڑ کے, اس نے مجھے گلے لگایا. تو میں نے کہا بھائی آپ مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے آپ کو یوٹیوب پہ دیکھا ہے کشمیری کل خراب چینل میں, تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں نے کہا کیوں, ایسا کیا ہے کہ آپ مجھے ایسے کہہ رہے ہو؟ اس نے مجھے اپنے گھر کی تھوڑی بات بتائی. تو اس نے بولا میرا ایک چھوٹا بھائی ہے, وہ کچھ مہینے پہلے ڈپریشن میں چلا گیا تھا. تو ہم نے اس کو بہت سارے ڈاکٹر کے پاس لیا تھا, تو لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. تو اب ان نے پھر ہمارے ویڈیو سٹارٹ کیے ہیں دیکھنے. تو پھر اس بھائی نے کہا کہ وہ آج بالکل ٹھیک ہے. The aim is to reach out to Kashmiri speaking population, not just in the valley but across the world. Restrictions and communication blockade could not dampen the enthusiasm of these youngsters for creating some original content and for inspiring many others to follow in their footsteps. Kashmir has mostly remained in news for all the wrong reasons, but despite all difficulties and hardships, these youngsters want to pursue their goals and scale new heights. All they need is a sense of direction and constant encouragement. That's all we have in today's show. Thanks for watching. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.